Okay, let's talk about the Baltimore scheme of classification of viruses. As we were talking about, we have completed DNA viruses, and for DNA viruses, we have seen that there are three types of DNA viruses: the double-stranded DNA virus, the single-stranded DNA virus, and the gapped DNA virus. But all of them will have to make messenger RNA, and this single stranded DNA alone and this gap DNA alone cannot transcribe themselves into messenger RNA unless and until they repair themselves and make double stranded DNA. Then of course they can transcribe themselves into messenger RNA. Then the third type of virus we have, and that's RNA viruses, double stranded RNA viruses. Then we have single stranded positive sense RNA viruses. Then we have single stranded negative sense RNA viruses, and then we have positive sense RNA viruses. Now I'm going to explain you one by one. RNA cannot transcribe itself directly into messenger RNA, although it's a double stranded RNA, but this you know that this strand, the positive strand, is here in this RNA virus, but it cannot be transcribed into messenger RNA unless it makes a copy of itself. So first it has to make a single strand of messenger RNA, and then it can make proteins. Similarly, we have positive sense and negative sense. Positive and negative sense doesn't mean RNA की positive sense and negative sense doesn't mean that they have certain type of charge on them. No, that's not true. Positive sense and negative sense is that the positive sense means that they contains the same kind of genes or genetic codes that a messenger RNA, viral messenger RNA have. So it's like same. They don't have to go transcribe themselves first and then make further copies of itself. So this positive strand RNA has to it can directly be transcribed into messenger RNA, but to make more copies of itself, it has to first make a complementary strand, a template, and then it can make more copies of itself. So it can directly transcribe into messenger RNA, and it will make more copies of itself by making a complementary strand or negative RNA. These negative RNAs, they are different in sense that they contain that host cell do not have RNA polymerase in them. होस्ट सेल के अंदर RNA पॉलीमरेज नहीं होता, DNA पॉलीमरेज होता है, जो नॉर्मल आपका सेंट्रल डॉगमा है, जो ये कहता है कि आपकी DNA से ट्रांसक्रिप्शन होती है इनटू मैसेंजर RNA एंड देन ट्रांसलेशन होती है. लेकिन RNAs जो होते हैं ये यूनिक इस सेंस में है कि इनके पास RNAs में RNA पॉलीमरेज आपके होस्ट सेल में नहीं होता. तो द वायरस itself must have that RNA polymerase in its capsid so that it can transcribe itself into messenger RNA. Otherwise it will not. और अगर आपके पास पॉजिटिव स्ट्रैंड RNA है तो इस स्ट्रैंड और इस स्ट्रैंड का डिफरेंस ही यही है कि ड्यूरिंग रेप्लिकेशन it doesn't have to transcribe itself into messenger RNA it has the same types of codes as messenger RNA है, लेकिन अपनी मज़ीद कॉपीज़ बनाने के लिए इसको टेम्पलेट बनाना पड़ता है और उसके थ्रू जो है ये मज़ीद अपनी कॉपीज़ बनाता है. डायरेक्टली भी ट्रांसक्राइब कर सकता है और कॉपीज़ बना के कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड बना के कॉपी कर सकता है. लेकिन ये नेगेटिव सेंस RNA ये डायरेक्टली मैसेंजर RNA में ट्रांसक्राइब नहीं हो सकता. तो इसके लिए इन RNAs के पास जो नेगेटिव स्ट्रैंड RNA होते हैं इनके पास एक एंजाइम होता है RNA पॉलीमरेज जो वायरस के साथ ही आता है, इनके जीनोम के साथ अटैच्ड होता है और वो RNA पहले ट्रांसक्राइब करता है मैसेंजर RNA में और फिर उसके बाद प्रोटीन्स बनते हैं.
इसके अलावा ये आपके पास हो गए डबल स्ट्रैंडेड आरएनए। इसमें से जो ये आपके पास पॉजिटिव स्ट्रैंड है, ये पॉजिटिव सेंस वाला आरएनए, ऑल्दो ये इसके अंदर मौजूद है, फिर भी ये अपने आप को एक सिंगल स्ट्रैंड मैसेंजर आरएनए में चेंज करेगा और उसके बाद मज़ीद जो है प्रोटीन्स बनेंगी। जो पॉजिटिव सेंस आरएनए वो डायरेक्टली भी कर सकता है और वो मज़ीद अपनी ही कॉपीज़ बनाने के लिए तो कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड बनाता है और उस टेम्पलेट के थ्रू मज़ीद अपनी कॉपीज़ बनाता चला रहता है। और ये नेगेटिव आरएनए, इनके पास आरएनए पॉलीमरेज होता है जिसके थ्रू ये पहले मैसेंजर आरएनए बनाएंगे और फिर प्रोटीन्स बनाएंगे। आप ये देखें कि दिस पॉजिटिव स्ट्रैंड आरएनए इज सेम एज मैसेंजर आरएनए, बट नॉट ऑल पॉजिटिव स्ट्रैंड या प्लस सेंस आरएनएज जो हैं वो एम मैसेंजर आरएनए का काम करते हैं। एज वी कैन सी हेयर इन दिस क्लास विच इज़ द रीट्रोवायरसेस, HIV कॉज करने वाले। ये वायरसेस जो हैं इनके पास एंजाइम होता है रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज, जो आपने देखा था हेपेटाइटिस बी वायरस के पास भी था। ये क्या करते हैं, ये इस आरएनए सिंगल आरएनए स्ट्रैंड से पहले सिंगल स्ट्रैंड डीएनए बनाते हैं, फिर उससे डबल स्ट्रैंड डीएनए बनाते हैं और उसके बाद फिर मैसेंजर आरएनए बनाते हैं और फिर प्रोटीन्स बनते हैं। तो ये आपके पास 7 क्लासेस बाल्टीमोर स्कीम की इस तरह से आप इसको क्लासिफाई कर सकते हैं कि डीएनए वायरसेस में हमारे पास डबल स्ट्रैंडेड डीएनए वायरस है, सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए वायरस है और गैप्ड डीएनए वायरसेस है, डबल स्ट्रैंडेड डबल स्ट्रैंडेड डीएनए वायरसेस है। इसके बाद हमारे पास आरएनएज आते हैं। आरएनएज जो हैं वो ज़्यादा आरएनए वायरसेस जो हैं दे आर डोमिनेटिंग ह्यूमन वर्ल्ड और ये ह्यूमन वर्ल्ड में ज़्यादा डिजीज़ कॉज करते हैं। तो इसमें हमारे पास मज़ीद 4 टाइप्स हैं, जिसमें से फर्स्ट है हमारे पास डबल स्ट्रैंडेड आरएनए, देन वी हैव सिंगल स्ट्रैंडेड और पॉजिटिव सेंस आरएनए, फिर हमारे पास सिंगल स्ट्रैंड और नेगेटिव सेंस आरएनए, एंड देन वी हैव पॉजिटिव सेंस आरएनए which reverse transcriptase itself into single strand DNA and then double stranded DNA and then they will make messenger RNA. तो यहाँ से हमारे पास डबल स्ट्रैंडेड आरएनए जीनोम, सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए जीनोम, सिंगल स्ट्रैंडेड आरए जीनोम माइनस सेंस, ये प्लस सेंस वाला है, और फिर सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए जीनोम दैट कैन रेप्लिकेट विद डीएनए इंटरमीडिएट। ये हमारे पास 4 क्लासेस किनकी आ गई आरएनए वायरसेस की। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। मैं दोबारा एक दफ़ा बता देती हूँ कि यूजुअली जो यूकैरियोटिक या प्रोकैरियोटिक सेल्स हैं उनमें प्रोटीन सिंथेसिस का मरहला जो है आपको पता है वो डीएनए से स्टार्ट होता है। डीएनए ट्रांसक्राइब इनटू मैसेंजर आरएनए एंड देन मैसेंजर आरएनए ट्रांसलेट इनटू प्रोटीन। लेकिन वायरसेस में ये नहीं होता। वायरसेस में हमारे पास आरएनएज होंगे या डीएनएज होंगे। डीएनएज होंगे तो दैन इट्स फाइन दैट इट कैन चेंज इटसेल्फ और ट्रांसक्राइब इटसेल्फ इनटू मैसेंजर आरएनए। बट व्हाट अबाउट आरएनए? आरएनए जब होता है तो आरएनए पॉलीमरेज जो है वो यूकैरियोटिक सेल्स में नहीं होता मौजूद। तो इसका मतलब है कि वायरस को ये एंजाइम खुद कैरी करना पड़ता है जो कि नेगेटिव सेंस आरएनएज कैरी करते हैं। पॉजिटिव सेंस में इसलिए ज़रूरत नहीं पड़ती क्योंकि ये दे हैव द सेम काइंड्स ऑफ जीन सीक्वेंस एज मैसेंजर आरएनए, तो ये डायरेक्टली भी अपने आप को ट्रांसक्राइब कर सकते हैं। लेकिन हमेशा अगर डबल स्ट्रैंडेड भी होगा तो वो पहले सिंगल स्ट्रैंडेड मैसेंजर आरएनए बनाएगा और उसके बाद प्रोटीन्स बनेंगे। इसी तरह से पॉजिटिव सेंस वाला भी हमारे पास ये डायरेक्टली भी ट्रांसक्राइब कर सकता है, लेकिन टू मेक मोर कॉपीज़ ऑफ इट सेल्फ इट हैज़ टू फर्स्ट मेक द कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड और टेम्पलेट एंड देन इट विल मेक मोर कॉपीज़ ऑफ इट सेल्फ। जो आपके पास सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए ये इसी तरह डिफ़र करता है कि इसके पास आरएनए पॉलीमरेज होता है और उसके थ्रू ये पहले अपना कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड बनाएगा और उसके बाद फिर प्रोटीन्स बनेंगे। और हमारे पास पॉजिटिव सेंस आरएनए जिनके पास डीएनए इंटरमीडिएट है, दैट मीन्स दे कंटेन रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज in their as their enzyme and they'll change this positive sense RNA first into a single strand DNA and then into double strand DNA and so on so forth. So ये आपके पास बाल्टीमोर क्लासिफिकेशन हो गई और अगर इसको आप याद कर लेंगे तो देन यू कैन प्लेस एनी वायरस इन एनी ऑफ दीज क्लासेस। ये 7 क्लासेस में ही फिक्स होंगी, तमाम तरह वायरसेस इसके अंदर आ सकते हैं और इसके थ्रू फिर आप इजीली क्लासीफाई कर सकते हैं from one to another. Now let's talk about first DNA viruses. इनकी कुछ डिटेल्स हम चेक कर लेते हैं
और DNA वायरसेस में आपके पास फर्स्ट वायरस इज़ फर्स्ट वायरस इज़ एडिनोविराइडी, जो हमारे पास फैमिली है एडिनोविराइडी एडिनोवायरसेस. एडिनो इज़ अ ग्रीक वर्ड फॉर ग्लैंड and they are medium size. As you can see, they are only about 75 nanometers, so they are medium size naked viruses with linear DNA. They were first identified in adenoid tissues, so that's why they are known as adenoviruses. They are highly resistant to chemical agents, and they are stable from pH 5 to 9 and in temperatures from 36 degrees centigrade to 47 degrees centigrade. Freezing can cause the loss of activity or loss of infectivity. So if we freeze these kind of viruses, then they are unable to produce infections. More than 80 different types of adenoviruses are now identified, and among which adenovirus types 40 and 41 causes 10 to 30% of all cases of severe diarrhea in babies and young children. Only half the children carrying the virus in their throat actually become ill. Diseases caused by adenoviruses are generally acute. Acute means that their onset is sudden and they are of short duration. So soon after entering the body, the virus appears in the blood, and measles-like rash may develop. Sources of adenoviruses are respiratory secretions and feces from infected persons. Then we have where is it is Then we have herpes viridae, the next family, herpes viridae. Herpes means it's also a Greek word, means creeping, and they are usually, you can say this these were the medium size, and these are 120 to 200 nanometers, so they are quite large and enveloped viruses. They are double-stranded DNA viruses. Herpes viruses are widely distributed in nature, and most animals are infected with one or more of the 100 types discovered. Almost 100 types of viruses are being discovered. These viruses causes a broad spectrum of diseases, which like simplest virus, varicella-virus, जिसमें varicella zoster, चिकन पॉक्स आता है आपके पास. इसके अलावा salivary gland वायरस भी इसमें होता है, साइटोमेगेलोवायरस. ये इन्फेक्शंस कॉज करता है एड्स के पेशेंट्स में ज़्यादातर. उसके बाद हमारे पास एप्स्टन बार वायरस भी इसी में है, कैपोसिस सार्कोमा, अनदर एड्स रिलेटेड जो आपके पास इन्फेक्शंस उसमें हैं. ह्यूमन हर्पीस वायरस 8 है. जो मोस्ट कॉमन है आपके पास हर्पीस सिम्प्लेक्स टाइप 1 और टाइप 2 है. जो टाइप 1 है दैट कॉजेज ओरल हर्पीस, और समटाइम्स इससे न्यूनेटल हर्पीस और जेनाइटल हर्पीस होती है. और टाइप 2 जो है वो जेनाइटल और न्यूनेटल हर्पीस कहलाता है. सो the core of the virion contains proteins around which the DNA is coiled, and in cells infected with herpes viruses, the viral double-stranded DNA can exist as a provirus. So इनकी एक universal property है these viruses, which is latency. Latency means that they can hide themselves in the visceral organs, और कहीं भी जाके या bones के अंदर जाके they can hide themselves, and they can remain there. Neurons की junctions में they can remain there for longer periods of time, and then they can whenever the conditions are favorable for them, then they can reoccur and cause infections in later stages of the host cell. तो ये इनकी एबिलिटी होती है, जैसे अगर
a child, for example, a child which was being recovered from chicken pox, varicella zoster जिसके बारे में भी बात कर रहे थे हम, तो इसकी एक लेटेंट फॉर्म भी है जो बड़े होने के बाद, यानी जब आप फिज़िकली आप स्ट्रेस में हों तो उसके रिज़ल्ट में या कोई दूसरे फैक्टर्स की वजह से ये क्या करता है कि ये दोबारा से ये छुपा हुआ जो लेटेंसी में चला जाता है वायरस, ये एक्टिव हो जाता है और देन इट कॉजेज़ disease, the chicken pox, which is known to be a causative agent in children, then it causes shingles. इसी की एक बड़ी फॉर्म है चिकन पॉक्स की जो कि एडल्ट्स में होती है. इट इज़ वेरी पेनफुल एंड वेरी infectious, so they are known as shingles. The fluids oozing from those vesicles, they carry varicella zoster virus. और अगर उसको आपने उसको कोई पर्सन कांटेक्ट हो जाता है तो और वो प्रीवियसली उसको चिकन पॉक्स नहीं हुए तो फिर वो इन्फेक्ट कॉज कर सकता है. तो दैट्स वाई इट्स वेरी कॉन्टेजियस. Of the more than 100 genes found in herpes virus, 11 are known to be involved in latency. यानी लेटेंसी पीरियड इनमें से 11 जो है वो अपने आप को हाइड कर सकते हैं और लेटर ऑन होस्ट में ही किसी भी वक्त रिकरेंस हो सकती है. कि जैसे हर्पीस सिम्प्लेक्स की एग्जांपल अगर ली जाए तो हर्पीस सिम्प्लेक्स अगर एक दफ़ा हो जाए तो उसको फॉलोअप आपको करना पड़ता है. आपको पूरी जो कोर्स दिया जाता है वायरल थेरेपी का वो पूरा करना पड़ता है. अगर उसको आप नहीं करते तो देन दिस इन्फेक्शन में रिकर. देन वी हैव पॉक्स वेराइटी. पॉक्स वायरस ये भी एनवेलप्ड हैं, लीनियर डबल स्ट्रैंडेड वायरसेस हैं. दे आर लार्जेस्ट अमंग द मोस्ट कॉम्प्लेक्स ऑफ ऑल वायरसेस एंड दे आर ऑल्सो वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड इन नेचर. एवरी एनिमल स्पीशी can be infected by a form of pox virus. The human pox virus, orthopox viruses, they are large enveloped brick-shaped viruses about 250 to 450 nanometer long and 160 to 260 nanometer wide. These viruses multiply in specialized portions of the host cell cytoplasm, which is known as viroplasm, and where they can cause skin lesions, typically of smallpox. And in cows, they can cause cowpox. Other pox viruses, such as monkeypox, can infect humans who have close contact with infected animals. The smallpox virus represents the first human pathogen purposely eradicated from the earth. Next we have Papova variety. We were talking about double-stranded DNA. Then we have Papova variety. Papova variety is named for 3 related viruses: the papilloma, the polyoma, and vacuolating viruses. These are also small, about 45 to 55 nanometer of the sizes, and they can Papova viruses are widely distributed in nature. They are naked polyhedral double-stranded DNA viruses, and more than 25 human papilloma viruses and 2 human polyoma viruses have been found. The papilloma viruses causes both benign and malignant warts in humans, and about 13 papilloma viruses strains are associated with cervical cancer. The most thoroughly studied vacuolating virus is simian virus 40, SV40, and this virus has been used by virologists to study the mechanism of this viral replication and oncogenesis, which is the development of cancerous cells. Then we have Hepadna viridae. They are also small enveloped double-stranded DNA, mostly double-stranded DNA,
और partially single-stranded DNA viruses भी हो सकते हैं इसमें. Their names comes from the infection of the liver hepatitis by a DNA, so that's why they are known as hepatna viruses. They can cause chronic infections, that is long and continued duration infections in humans. Liver infections in humans and other animals including ducks. In humans, the hepatitis B virus causes hepatitis B, which is a very fatal and chronic disease and can cause liver cancer. Then we have parvoviridae. The parvoviruses are small, naked, linear, single-stranded DNA viruses. So their genetic information is limited, so they must take the help of another unrelated helper virus to divide themselves or to replicate themselves in the host cells. That means कि इनकी जो genetic information है ये प्रोटीन को ट्रांसक्राइब नहीं कर पाते, तो इनको हमेशा किसी दूसरे ऑन गोइंग वायरस की हेल्प चाहिए होती है और उसके साथ मिलकर ये अपने आप को रेप्लिकेट कर सकते हैं. जो 3 genera which are known are Dipendovirus, Parvovirus and Erythrovirus are identified in vertebrates. The Dipendovirus are often called adeno-associated viruses because they replicate more baryons they replicate with adenoviruses, यानी herpes viruses के साथ मिलके ये को इन्फेक्शन कॉज करते हैं. कोई ह्यूमन डिजीज़ इस जीनस से अब तक सामने नहीं आई, so they are not capable of causing harm or causing any infection in humans. Members of the genus Parvovirus causes disease in rats, mice, swine, cats and dogs. और इनकी भी कोई known the only known parvovirus to infect humans is erythrovirus, जिसको हम B19 के तौर पे भी जानते हैं. This one B19. B19 is responsible, it was identified in 1974 and it is responsible for 5th disease erythema infectiosum, और इसको इसलिए ये नाम दिया गया 5th disease because ये क्लासिकल रैश एसोसिएटेड है चाइल्डहुड से. चाइल्डहुड डिजीज़ में जो रैशेस सामने आते हैं जिसमें मीज़ल्स था, स्कारलेट फीवर था, रूबेला था और एक 4th रैश प्रोड्यूसर भी था जो अब नहीं है मौजूद, और उसके बाद ये 5th वन आया था B19. ये डीप रेड रैश चिल्ड्रंस चीक्स पे, ईयर्स पे कॉज करता है और आर्थराइटिस और रैश कॉज करता है एडल्ट्स में. तो B19 वायरस कैन ऑल्सो क्रॉस प्लेसेंटा एंड डैमेज blood forming cells in the fetus, which can lead to anemia, heart failure and even fetal death. So the only genus that is responsible to cause disease in humans is B19. Now we'll discuss RNA viruses. RNA viruses, as I've told you earlier, that they can be either positive sense RNA viruses or negative sense RNA viruses. Positive sense RNA viruses contains the same sequence of genomes that a viral messenger RNA have. इसके important groups में first we have Picornaviridae, 1 copy of positive sense RNA virus. They are very small, about 30 nanometer in diameter. They are naked, that means they are non-enveloped, polyhedral, positive sense RNA viruses. They include more than 150 species that causes diseases in humans, and after infection these viruses quickly interrupt all functions of DNA and RNA in the host cell. Picornaviridae are divided into several groups, including enterovirus, hepatoviruses, and rhinovirus. Entero is a Greek word for intestines, so it includes enteroviruses includes poliovirus. These viruses are resistant to many chemical substances, and then they can replicate
in and pass through the digestive tract unharmed. Unless inactivated by host defense mechanism, the viruses invade blood and lymph in spreading through the body, but especially into the nervous system. Poor sanitation conditions increases the number of enteroviruses, and human overcrowding helps their spread. As a result of early and frequent exposure, most children living in such conditions acquire infection in infancy, and when paralysis is unlikely to occur, and symptoms are mainly flu-like. It is the older child and adult that usually develop paralysis. Thus, paralytic polio epidemics are uncommon in developing nations. Poor sanitation conditions are also responsible for the spread of certain hepatoviruses. Hepato, Greek word for liver. The hepatovirus or hepatitis A virus, for instance, is transmitted through the fecal oral route, uh, which with disease arising from the ingestion of contaminated food or water. The major organ infected is liver. The genus Rhino is a Greek word for nose. It includes more than 100 types of human rhinoviruses, and one of the genera uh, of this virus responsible for human infections is common cold. Human rhinovirus do not cause digestive tract diseases because they cannot survive the acidic conditions in the stomach. Instead, they enter the body through the mucous membrane of the nasal passages and replicate in the epithelial cells of the upper respiratory tract. Virologists have discovered that these capsid attach to only a few receptors in the nasal mucous membrane. Thus, it may be possible in the future to prevent colds by designing chemicals that cover these receptors so that rhinoviruses cannot attach. राइनोवायरसेस के बारे में ये कहा गया है कि इन जो एपिथेलियल सेल्स हैं इनमें इनके कैप्सिड की रिसेप्टर्स मौजूद होते हैं जो कि इसको अटैच कर लेते हैं और जिसकी वजह से ये वायरल जो है कॉमन कोल्ड कॉज करता है. तो अगर हम इन रिसेप्टर्स को ओवरकम कर लें या कोई ऐसी केमिकल्स बना लें जो इन रिसेप्टर्स को कवर कर ले तो देन वी कैन प्रिवेंट कॉमन कोल्ड. द नेक्स्ट virus in this series is Toga viridae. Toga viridae or Toga viruses are also small enveloped polyhedral viruses of positive sense viruses. They multiply in the cytoplasm of many mammalian and arthropod host cells. Toga viruses known as arthropod-borne viruses, and they are transmitted by vector. Vector में कोई भी insect हो सकता है like mosquito, and it can cause several kinds of encephalitis in humans and in horses. The rubella virus, which is the cause of German measles in this family, is not transmitted by arthropods, rather it is spread from person to person. तो टोगा वैरायटी में आपके पास रूबेला वायरस है, ये इस तरह से नहीं होता. बाकी ये एक्वाइन एंसेफेलाइटिस वायरस जो है ये बायोवेक्टर यानी मस्कीटो के थ्रू जो है ये अपना इन्फेक्शन कॉज करता है. देन वी हैव Flaviviride. It is also enveloped polyhedral positive sense RNA viruses. They are transmitted by mosquitoes and ticks. The viruses produces a variety of encephalitis or fevers in humans. The yellow fever virus is a flavivirus. It causes hemorrhagic fever in which blood vessels in the skin, mucous membranes and internal organs bleed uncontrollably. Hepatitis C infection is also caused by a flavivirus. Hepatitis C virus is also included in Flaviviride. Then we have the last one in this series, positive sense में Retroviridae. They are also enveloped viruses that have two complete copies of positive sense RNA, and they also contain the enzyme reverse transcriptase. This reverse transcriptase uses the viral RNA to form a complementary strand of DNA, which is then replicated to form a double-stranded DNA
and this reaction is exactly the reverse of the typical transcription step, that is DNA directs RNA for protein synthesis. Here the RNA synthesizes DNA to cause protein synthesis. For virus replication to continue, the newly formed DNA must be transcribed into viral RNA that will function as messenger RNA for viral protein synthesis and will be incorporated into the new virions which are being produced. To do so, the DNA must first migrate to the host cell nucleus and become incorporated into the chromosomes of the host cell. Such integrated viral DNA is known as the provirus. यानी इस तरह के वायरस के पार्टिकल्स ये जो रिट्रोवेराइडी है दिस कॉजेज HIV और HTLV इन एड्स और एडल्ट ल्यूकीमिया ट्यूमर्स वगैरह कॉज करता है, तो ये प्रो वायरस में चेंज होता है. प्रो वायरस में चेंज होने का मतलब ये कि जब ये होस्ट सेल के अंदर अब रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज के थ्रू DNA बना लेता है, वो DNA होस्ट के न्यूक्लियस के अंदर जाके उनके क्रोमोसोम्स के साथ अपने आप को इंटीग्रेट कर लेता है, फ्यूज़ कर लेता है, और वहाँ पे ये प्रोवायरस के तौर पे काम करता है. Retroviruses causes tumors, leukemia in rodents and birds and as well as in humans, and the human retroviruses invade human defense cells called T lymphocytes and are also referred to as human T cell leukemia viruses. Both HTLV1 and HTLV2 are associated with tumors, leukemia tumors, where the human immunodeficiency virus HIV1 and HIV2 strains causes AIDS, acquired immunodeficiency syndrome. Then we have, okay, for this session I will stop it right here, and in the next lecture we will continue